Hello everyone and a very good morning to all of you and welcome to BYJU'S Exam Prep, the most comprehensive preparation app for all exams. As we all know, 11 a.m. in the morning, we come up with the Hindu analysis. So today is Wednesday and we are here with November 16, the Hindu analysis. आज 16 नवंबर है और आज Wednesday है और आज की हम लोग the Hindu analysis लेकर हाजिर हैं. So let's start. If I am audible, just write in the comments, yes sir, you're audible, so that we can move on. So these are some of the important articles. एक ऊपर में important article, here it is. A veteran Telugu actor Krishna passes away, so we'll be discussing little bit about it. Then these are the three important articles. The first one here is India's export shrink 16.7% and import rise by 5.7% in October. एक ये article है. This was the article. Sorry. And then here is an article. PM meets Xi Jinping, Biden in Bali, talks with 8 leaders today. And I hope you are aware, G20 summit ho raha hai. G20 summit is happening and this article is about that. Then here it is an article which says, PM Modi reiterates call to stop war in Ukraine. So these are actually the three important articles we will be discussing today. So let's start with this one. ये आर्टिकल क्या करी, इंडियाज एक्सपोर्ट श्रिंक 16.7% एंड इंपोर्ट राइज बाय 5.7%. एक्सपोर्ट का मतलब होता है ना निर्यात, राइट, और इंपोर्ट का मतलब आयात इन हिंदी, राइट. सो एक्सपोर्ट हैज गॉन डाउन एंड इंपोर्ट हैज इंक्रीज्ड इन द लास्ट मंथ. Now I want to know whether your concept regarding exports and import are clear or not. So there's a question for you. I have told you that I'll be asking more number of questions in the Hindu analysis. मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अब हम questions ज्यादा पूछेंगे because your exams are near. So we need some sort of revision also. So this is a revision series also. Okay. So the question is, what happens when export decreases and import increases? And these are the four options. Please read the question carefully. Do not be in a hurry. Read the question, answer it. Whenever you are answering it, write the explanation also. ठीक है, तो आप इसको पढ़ो ठीक से, क्वेश्चन हड़बड़ाना नहीं है, आराम से आंसर करना है, और जो भी आप आंसर करो उसका एक्सप्लेन थोड़ा सा करके कि what would be the right answer to this question. So see, sometimes what happens is someone answers, then people start copying it. अगर आपको कोई और आंसर लगता है तो आप अपना आंसर दीजिए और एक्सप्लेन करके. Can I get little bit of explanation? Yes. Many people are saying option A. जब export decrease करे और import increase करेगा तो क्या होगा? Trade deficit widen होगा, increase होगा. Yes. Yes. So the trade deficit will increase. It will increase trade surplus? No. Trade surplus तो और कम होगा, deficit की तरफ जाएगा. It would increase forex reserve? No. It would decrease foreign exchange reserve. Because you have to pay more import bill. Import bill ज्यादा देना होगा ना. So you have to send more dollars to buy something. ज्यादा डॉलर भेजना होगा कुछ खरीदने के लिए, इसलिए इंपोर्ट इंक्रीज हो गया है. और आपके पास एक्सपोर्ट डिक्रीज हो गया है, सो डॉलर्स यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो आ रहा होगा वो रिड्यूस हो जाएगा. बिकॉज व्हेन यू एक्सपोर्ट समथिंग यू गेट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, सो दैट इज इन डिक्लाइन. यू विल गेट लेस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिकॉज योर एक्सपोर्ट हैज डिक्लाइंड. सो जब एक्सपोर्ट डिक्रीज होता है और इंपोर्ट इंक्रीज होता है, सो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व विल डिक्रीज, ऑफ कोर्स इट विल गो डाउन. यस श्रेया राजपूत, वेरी गुड, करेक्ट. हाँ, सरप्लस इज व्हेन एक्सपोर्ट इंक्रीजेस एंड इंपोर्ट डिक्रीजेस. हाँ, यस देवबाद्रिता, राइट, वेरी गुड. हाँ, so that is why your concept of foreign exchange reserve, import, export should be very much crystal clear. So the right answer to this question is option A. It would increase the trade deficit. Trade deficit जो है वो बढ़ जाएगा. So that is what actually the article says. Read it carefully. देखो इसको एक्सप्लेन करने से पहले एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, मतलब मैं दिखा रहा हूँ पहले. फर्स्ट, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ CLAT 2020. ये 2020 का क्वेश्चन है. That is why, see, the reason why I'm asking these questions is because such type of questions were asked in the past. जैसे ये 2020 में क्वेश्चन आया था, when pattern got changed for the first time, India now has record foreign exchange reserve of 1. ठीक है, 1 ब्रैकेट में लिखे $1 billion. Then they asked this question, what is 1? So they were expecting you to know कि at that time what was actually the foreign exchange reserve. उस टाइम पर इंडिया का foreign exchange reserve क्या था, वो आपसे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे जानना. It means you should be knowing what is the foreign exchange reserve of your country at that time. ठीक है. So now there's a question for you based on the CLAT 2022-2020 pattern.
व्हाट इज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया करेंटली? करेंटली मतलब अक्टूबर की बात करें, जैसे अक्टूबर नवंबर 2022, आई मीन द मोस्ट लेटेस्ट फिगर आई एम आस्किंग. So this is based on the CLAT 2020, है ना question. So please answer this question. What is the right answer? The correct, what is the foreign exchange reserve of India? $400 billion, $530 billion, $625 billion, $590 billion. आप बताओ इसका सही जवाब क्या है? नहीं, ये वाला जो है ओल्ड है गाइस. देखो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज, आई एम आस्किंग अबाउट दिस वन. अक्टूबर 2022 का पूछ रहे हैं. ये तो वो वाला है ना 2 years बैक का है. आई एम आस्किंग अबाउट दिस वन, यानी करंटली. ठीक है, तो इसको क्लैट 2020 मत लिखो. दिस इज बेस्ड ऑन क्लैट 2020, है ना. करंटली मींस अक्टूबर 2022 का आई एम आस्किंग. यू मस्ट बी नोइंग द रीसेंट वन ना, वो 2 साल पहले पूछा गया, अब आपको रीसेंट पता होना चाहिए. So people are saying B, option B, Alisa, Aditi, Nirvar, Asmita, Nancy, Kishan, Rakhi, you all are right. हाँ, it's $529 billion के आसपास है. So B is the right answer to this question. ठीक है, so just remember it. देखो अभी ये इनफैक्ट नवंबर की आर्टिकल है. दिस इज अ 15th नवंबर आर्टिकल. मतलब yesterday की आर्टिकल है बिजनेस स्टैंडर्ड की. What it says, India's foreign exchange reserves drops by $1.09 billion to 529.99 billion. ठीक है, so आप ये मान सकते हो कि इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इज समवेयर अराउंड $530 बिलियन. तो आप ये मान के चलो कि $530 बिलियन के आसपास है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा. ठीक है, सो व्हेन एग्जाम विल कम, हो सकता है मे बी 530 की जगह 535 हो जाए, 525 हो जाए. सो दैट विल बी, बहुत नियर ऑप्शन नहीं देंगे, बट यस दे आर एक्सपेक्टिंग यू दैट एटलीस्ट यू शुड हैव सम रफ आइडिया अबाउट हाउ मच इज योर आवर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. रफ आइडिया शुड हैव. ठीक है, सो 530 के आसपास, अराउंड $530 बिलियन. यस, so B is the right answer to this question. Now, so the article was saying India's merchandise exports shrank by 16.7% in last month, October. Okay, यानी पिछले महीने shrank कर गया. shrink मतलब reduce कर गया ना, यहाँ था, so it got decreased. Okay, by $29.8 billion. The first contraction since February last year. पहली बार पिछले फरवरी के 2021 में हुआ था, उसके बाद अब ऐसा कॉन्ट्रैक्शन देखा गया. And imports grew by 5.7%, और इंपोर्ट उल्टा और बढ़ गया. ठीक है, $56.7 बिलियन. वाइडनिंग द ट्रेड डेफिसिट, here it is written, है ना, यहाँ भी देखो लिखा होगा. India's trade deficit widened to 26.91 billion last month. A trade deficit have got increased, of course. When export will decrease and import will increase, so trade deficit will widen. ट्रेड डेफिसिट और बढ़ जाएगा. सो आप देख सकते हो, तो ऐसे ही होता है ना. सो डेफिसिट हाउ यू कैलकुलेट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करते हैं ट्रेड कैलकुलेट करने के लिए. एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करोगे तो नेगेटिव में आएगा, है ना. देखो एक्सपोर्ट कम है, एक्सपोर्ट इज लेस. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस वन. दिस इज अक्टूबर 2022, है ना. ओके, एंड दिस इज अक्टूबर 2022. ओके, नाउ सो इफ यू सब्ट्रैक्ट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, you will get a negative number. Yes or no? Yes. देखो ये छोटा ही बड़ा है ना, so it means it is actually in we are actually in trade deficit. नेगेटिव में आ गया तो डेफिसिट में. so कितना का डेफिसिट है? here it is written $26.91 okay billion. ठीक है, is it clear? so that is how you need to have a basic idea about widening of deficit etc and all foreign exchange reserve. Okay, yes, let's talk about another article on first page. Guys, everyone please press the like button. We are seeing 18 likes, 45 is watching, so सबको फटाफट like button press कर दो. Everyone, yes. Okay, so this is the question. PM meets Xi Biden in Bali, talks with 8 leaders today. So that is what the article is. You can see Prime Minister Modi held talks with US President and have a word with, exchange words with Chinese President Xi Jinping. यानी यूएस प्रेसिडेंट से भी कुछ बातें हुई और चाइना के प्रेसिडेंट से भी. ठीक है, ऑन वेडनेसडे मिस्टर मोदी इज एक्सपेक्टेड टू होल्ड मोर स्ट्रक्चर्ड बायलैटरल मीटिंग विद एटलीस्ट 8 of the 16 leaders present in Bali for the annual meeting of the world's most advanced economies, including his first such interaction with UK's Prime Minister Rishi Sunak and Italy's Giorgia Meloni. अभी आपको पता होगा रिसेंटली ऋषि सुनक हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके एंड Giorgio Meloni the Prime Minister of Italy, है ना. So these are the new actually newly appointed. So the first time PM Modi will be meeting them. तो पहली बार इन दोनों से मुलाकात होगी. So Mr. PM Modi meeting with Xi Jinping, their first such in 3 years was remarkable given that they had not any public interaction at Shanghai Cooperation Organization.
देखो, I hope you are aware, this was asked in exam last year also, CLAT, है ना, about Galwan Valley clash. Okay, so after Galwan Valley clash, actually this year somewhere around September October, there was a Shanghai Cooperation Organization meeting in Samarkand. So PM Modi also went there. PM Modi also went there, and Xi Jinping was also there, but there was no such talks. तो वहां पे उतना बातचीत नहीं हो पाया. So we can say almost after 2.5 to 3 years, we are having an interaction, means India's Prime Minister is having an interaction with the Chinese President Xi Jinping. तो almost 2.5-3 साल बाद दोनों की मुलाकात हुई. आप कह सकते हो गलवान वाली क्लैश के बाद पहली बार, for the first time after गलवान वाली clash, both met in public and all, right? So that is what it says. The two leaders had last met on November. तो पिछले साल मतलब आखिरी जो मुलाकात हुई थी दोनों की वो नवंबर 2019 में हुई थी. So you can add 3 years, so it would become November 2022, right? So they met after 3 years of this. Yes, Rishi Sunak is from Conservative Party, Ajit Kumar. Okay. So that is what the article says. They have not publicly spoken at all since April 2020 standoff. स्पेसिफिकली यहाँ लिखा हुआ भी गलवान वेली क्लैश के बाद कोई पब्लिकली दोनों मिल करके दोनों ने कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह नहीं की. सो दैट इज व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड हियर. Now another article on first page here. This was an article. PM Modi reiterates call to stop war in Ukraine. So दोबारा उन्होंने कहा है कि ग्लोबल जैसे जंग को रोकना चाहिए. इशारों में उन्होंने कहा the war in Ukraine, climate change and COVID-19 pandemic have created global crisis that is hurting the poor citizens of every country. तो जैसे कोविड-19 से या यूक्रेन वॉर से हर लोगों को नुकसान हो रहा है, हर गरीब लोगों को नुकसान हो रहा है. क्यों? बिकॉज यूक्रेन एक्चुअली प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक व्हीट एंड ऑल. रशिया एक्चुअली एक्सपोर्ट्स ऑयल, नेचुरल गैस, तो उसमें बहुत सारे many countries are not buying it, and because of which prices are rising. बहुत सारी चीज होती है ना, जंग होती है तो बहुत सारे लोगों को असर पड़ता है. तो जब भी प्राइस राइज होगा, poorest will be affected, है ना. If let's say for example oil price will rise, let's say in India, so the poor will be affected more, because जो अमीर होंगे वो थोड़ा पैसा बढ़ा के खरीद लेंगे तेल, लेकिन जो गरीब होगा उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, right? So for him or her it becomes very difficult. So that is what is being discussed. In fact, earlier also PM Modi had talked about 2 months back also the similar thing कि not an era of war. तो 1-2 महीना पहले भी PM मोदी ने कहा था कि not an era of war, he said, मतलब जो आज का जमाना है वो जंग का जमाना नहीं है, means it was actually this was being referred to Russia Ukraine war, right? Now the next one is page number 1 में second half में एक article थी, and it's a serious article. My head hangs in shame, says judge over relief to delay token of severe deaths. So there is something called as manual scavenging. How many of you understand this? It's a very serious issue, manual scavenging. See, what exactly is this? Let me explain. This is called as manual scavenging. And see, उसमें होता क्या है कि they go inside the, you can say, sewer and clean the sewer. Okay, but yes, it is actually against human dignity. ये human dignity against है कि नाली में जा करके वो लोग साफ करते हैं. Many times actually they die because of suffocation, and you can say smell and all, suffocation and gas. कई बार उन लोगों की डेथ हो जाती है. So basically, and because of which many times judiciary have criticized it कि this is against human dignity. No country sends its people to gas chamber to die. Supreme Court on manual scavenging. देखो ये 2019 की आर्टिकल है. Okay, so this is a serious issue. We need to do it with the machines. और वो लोग भी मजबूरी में जाते हैं ना. So they are poor. So they want to earn something. They are so poor that they do not have any job. So they want to earn something. So that is why they go, so that they can get some money. तो वो सोचते हैं गरीब है, कुछ अगर नाली साफ करके कुछ पैसा मिल जाएगा तो घर चल जाएगा. So that is an issue. Okay, तो हुआ क्या है कि recently यही हुआ था कि my head hang in shame, says Delhi High Court Chief Justice on Tuesday while condemning DDA for not paying 10 lakh compensation to the families of 2% died of inhaling toxic gases. देखो हुआ क्या कि जैसे ये लोग जब जाते हैं तो लोग कई बार डेथ हो जाता है. तो रिसेंटली क्या हुआ, 2 people have died. 2 person have died while cleaning the sewer. नाली साफ करते वक्त 2 की डेथ हो गई थी गैस के कारण, मतलब उसमें स्मेल के कारण. तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था, so Delhi High Court had said to provide 10 lakh rupees as compensation. Until now Delhi Development Authority has not provided. 6 अक्टूबर को कहा गया था, अभी तक
दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 10 लाख का जो कंपनसेशन देना था उन दोनों को नहीं दिया गया है, उनकी फैमिली वाले को, ठीक है. सो द रिलेटिव्स हैव नॉट गॉट दोस कंपनसेशन. सो दैट इज व्हाई द दिल्ली हाई कोर्ट चीफ जस्टिस सेड माय हेड हैंग इन शेम, यानी बहुत अफसोस की बात है, मेरा सर शर्मिंदा है कि आप तो अभी तक आप लोग उनको दिए नहीं है, उनके रिश्तेदारों को. बिकॉज ऑफ कोर्स, और वो उन्होंने ये भी लिखा कि ये लोग साफ करते हैं हमारी बेनिफिट के लिए. जब वो नाली साफ करते हैं तभी तो हम लोग ठीक से रह पाते हैं, अदरवाइज अगर नाली जाम रहेगा तो रोड पे पूरा नाली आ जाएगा, पानी आ जाएगा. सो एक्चुअली दे वर्क हार्ड to ensure that our life should be easy, right? So we must respect them. पहली बात उनको respect करना चाहिए. As a common man, we must respect them because they are serving us. Otherwise, if they are not cleaning, then otherwise it will be very painful. So the High Court had initiated a PIL based on news report about death of a sweeper and security guard inside a sewer on September 9 and all. तो पहली सुप्रीम हाई कोर्ट ने एक PIL इनिशिएट किया था इसी से रिलेटेड कि आपको कंपनसेशन देना चाहिए और, ठीक है. So ये September 9 का इंसिडेंट है. And when we are talking about manual scavenging, the first thing we must be knowing is, इतना तो पता होगा कि manual scavenging violates human dignity. It is against human dignity that a person should go inside the sewer and clean it. And hence it violates which of the following fundamental rights? एक इंसान की ह्यूमन डिग्निटी जब वायलेट होती है तो कौन सा फंडामेंटल राइट वायलेट होता है? 14, 21, 20, 25. Anyone? Guys, everyone please press the like button. We are seeing 33 likes, 55 is watching. सबको like button press कर दो. Yes, the right answer is article 21B. Sakshi, Aditi, Pandey, Shubham, Asmita, Sonal, Shreya, Preeti, you all are right. B is the right answer to this question. देखो article 25 क्या बात करता है? It talks about right to life and personal liberty. Yes. And Supreme Court itself has expanded the definition of right to life and said right to life also includes a right to dignified life, है ना? मतलब यह है कि अगर राइट टू लाइफ की आप बात करते हैं तो राइट टू लाइफ का मतलब राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, इज्जत वाली जिंदगी होनी चाहिए, है ना? सिर्फ जिंदगी नहीं बिताना, बेसिक ह्यूमन राइट्स जो है या उसकी जो इज्जत है वो भी कायम रहे, बरकरार रहे, राइट? सो मैनुअल स्कैवेंजिंग मोस्ट इनह्यूमन वायलेट्स आर्टिकल 21. कर्नाटक हाई कोर्ट, कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, many various high courts and Supreme Court have said कि manual scavenging violates article 21. But still it is in a practice and still people are dying. So उसका replacement ये है कि machine से, big machines should be there and all. और दूसरी बात ये है कि they are doing it, why? Because they are poor. So we need to create a good human quality job, means good quality jobs, है ना? कि थोड़ा human dignity, अगर manual work भी है, कोई मान ली लेबर वर्क भी है, so it should be dignified. It should not be like you have to go inside the sewer and all. ऐसा नहीं होना चाहिए ना, बेचारे गरीब हैं तो इसका मतलब नहीं है कि वो नाली में जाएंगे. So that is why it's a serious issue. So just have an idea about it. Let's move on further. These are the two articles on the first page. तो पहले ये वाला चलते हैं. Political heads have to be restrained in speech. Supreme Court ने कहा, so there's a constitution bench which is hearing a matter related to you can say this. See what happens is whether guidelines should be framed to stop MP, Minister, MLA from making unguarded and derogatory statements in public. So as a hearing is going on, whether Supreme Court should make a guideline that at least MPs, MLAs, ministers should not speak anything wrong or a useless thing, or you can say unguarded or derogatory remarks. Sometimes we have seen, I mean, even MP, MLA, ministers also uses, can say bad words, unparliamentary words, sometimes hatred, can say hate speech and all. So that is why the Supreme Court has said कि we need to form a guideline. एक guideline बना देना चाहिए. क्या guideline बनाना चाहिए कि नहीं, उसी पर hearing चल रही है, जिसमें कि MP, minister, MLAs को पर रोक लगाया जाए कि आप एक्स्ट्रा कुछ unnecessary बात ना बोले, यानी derogatory statement नहीं दे, या कोई अनपार्लियामेंट्री बात या कोई ऐसी बात जो कि इंसाइट कर सकती है वायलेंस, उस पर रिस्ट्रिक्शन हो. So because they have to be more responsible. They are not common man, they are MP, MLA and ministers. They are representative of people. So they have to behave in a more better and decent manner as compared to the common man, right? For any person holding a public office, there is an unwritten rule that it is our constitutional culture that what we impose as a self-restriction when we hold office. यानी पहली बात तो खुद ही को सेल्फ रिस्ट्रिक्शन करना चाहिए कि देखिए अगर हम एमपी हैं या एमएलए हैं तो हमको संभल के बोलना चाहिए, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी एमपी, एमएलए, मिनिस्टर शुड himself or herself have self restriction that I should not be speaking. I am having a constitutional post.
So I should not be speaking anything which is unrequired, unparliamentary or indecent, है ना? So that is what Justice Nagaratna observed orally. तो देखो, let's see whether the Supreme Court makes a guideline or not. तो इसको आप follow करो कि Supreme Court इस पर guideline बनाती है कि नहीं, इस पर देखा जाएगा. Yes, the next is, before moving on, there's a question for you. What is the ideal total fertility rate? 2.0, 2.1, 2.5, 3.0? Because there's an article on this, so I'm asking this question. Total fertility rate यानी TFR जो है, ideal कितना होना चाहिए? Ideal. Yes, it should be 2.1. Riya Verma, very good. Asmita Singh, right? हाँ. So ideally, if total fertility rate is 2.1, it is considered as the best. ठीक है? मतलब ये है, total fertility rate means on an average a woman is bearing the number of child, right? है ना? So in her reproductive cycle. So जैसे on an average अगर एक female 2.1 child bear कर रही है on an average, so it is considered as the best, है ना? So neither it will be much increase in population, not decrease in population. तो ideal 2.1 माना जाता है, इसको हम लोग replacement level भी कहते हैं ना? Okay. So basically this is an article. I hope you are aware, मैंने बताया भी था कई बार कि on 15th November the world would have 8 billion population. तो अब दुनिया के पास 8 billion population हो गया है. So if somebody is asking what is the population of the world, say 8 billion. कितना है? दुनिया की population कितनी होगी? 8 billion people are there. And the best thing is that India has decreased its total fertility rate from 2.0 to even 2.2 to 2.0. So in fact less than the ideal. Ideal से भी थोड़ा नीचे ही आ गया है, ठीक है? So now it means it is reflecting that India is able to control population in an effective way. The main reason for the decline in fertility includes increase in adoption of modern family planning, etc. and all. ठीक है? इसका मतलब ये है ना? देखो यहाँ पे लिखा हो कई जगह. The total fertility rate has declined. A total of 31 states and union territories constituting 69.7% have achieved fertility rates of 2.1. So almost 70% के आसपास states और union territory ने 2.1 fertility rate achieve कर लिया. It means we are on a right track to control effective, और कैसे to make family planning और population control effective, है ना? It is an indicator of effective health policies, says United Nations. So India's growth is stabilizing, यानी बहुत तेज से growth नहीं कर रहा, stabilize कर रहा है, ठीक है? So that is what it says. Okay, yes. Okay, yes. Now, so that is what it is. आप देख सकते हो कुछ states बचे जिसका 2.1 से ज्यादा अभी भी. बिहार, मेघालय, यूपी, झारखंड and मणिपुर still are 2.1, more than 2.1. Otherwise बाकी का चाहे तो 2.1 है या उससे और नीचे ही है, ठीक है? So you can see some of the states are still not 2.1, but yes, we hope that they would also become 2.1. Okay, yes. The next is, there's an article on page number 4 which says veteran Telugu actor Krishna passes away. I hope you are aware. He was actually the father of Mahesh Babu. He's a very famous actor, है ना, from South India. So इनका death हो गया. So just go and read something about him. थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, है ना. Before moving on, guys, there's a small announcement. Those who are preparing for CLAT and ALET, this is the best test series. 45 plus marks, 20 CLAT, 25 non-CLAT mock tests, 9,000 plus practice questions. Detailed mock analysis will be provided by NLU alumni based on actual exam pattern. And this is the last lab to CLAT 2023. We are running at 9 p.m. Please subscribe to our channel. Okay. And everyone press the like button. We are seeing 36 like, 56 is watching. Sabko fatafat like button press kar do. Okay, so today is 16th. So upcoming, so Nivedita ma'am at 9 p.m. will be coming for a CLAT revision. So you can join this session. Then 19th ko Abhimanyu sir and 20th ko again Abhimanyu sir. Now let's talk about editorials. So ye 4 editorial hai. This is the main editorial. See why this is so important. A call to action to avoid climate catastrophe. अगर आप देखोगे इसमें author का नाम नहीं लिखा हुआ है. I have told you generally ये वाली article it is written by some author. But if you see it carefully, there's no author here. If you see it carefully, there is no author here. यहाँ पर कोई author नहीं है, है ना? Now the question is, तो फिर लिखा किसने? तो अब देखो यहाँ क्या लिखा है? The Hindu is publishing this editorial along with the Guardian and several other media outlets across the globe as an urgent call to action on climate change.
आप कह सकते हो दिस रिप्रेजेंट्स द व्यू ऑफ कॉप 27। ये किसी ऑथर ने लिखा है, ये कॉप 27 की अपील है एक तरह से, ठीक है। सो दैट हैज बीन पब्लिश्ड बाय वेरियस न्यूज़पेपर, कई सारे अखबारों ने इसको छापा है। सो देयर कैन बी वन क्वेश्चन फ्रॉम हियर, ओके। नाउ लेट्स सी. So what it says, climate change is a global pattern that requires cooperation between all nations, and that is why today more than 30 newspaper and media organization, more than 20 countries have taken a common view. लगभग 30 अखबार ने इसको छापा है, almost 30 newspaper are publishing this. Time is running out. Rather than getting out of fossil fuel and to clean energy, many wealthy nations are reinvesting in oil and natural gas. देखो यहीं पे गड़बड़ हो रहा है मामला क्या? What it is saying, many rich nations are again investing in oil and gas. अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, वी शुड नॉट इन्वेस्ट इन दिस, वी शुड गो फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, है ना। मेन बात यही ना है, कम से कम रिच नेशन को तो कोशिश ज्यादा करना चाहिए। सो दिस इज व्हाट द आर्टिकल सेज। इसमें ये लिखा है कि जो रिच नेशन है उसकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी हैव डिस्कस सो मेनी टाइम्स दैट रिच नेशन हैज मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंट्रोल क्लाइमेट चेंज, ओके, टू टेक इफेक्टिव मेजर्स। But we are seeing, according to this article, that in recent days or recent years, we are seeing still they are going back to oil and natural gas. तो फिर oil and gas की तरफ जा रहे हैं, failing to cut emissions fast enough. And time is running out. अगर अब और देर कर दिया जाए तो फिर climate change को शायद कोई नहीं रोक पाएगा. So if things are not done at a right time, then perhaps things will be out of the order. Since COP26 in Glasgow last year, countries have only promised to 1/5 of what is needed to stay track. Okay, we have discussed that by the end of the century 2100, we should not cross this limit. This is a limit. Average Earth's temperature should not be more than 1.5 degrees Celsius. ठीक है ना, should not increase by 1.5 degrees Celsius. Let's say average temperature is x, so x plus 1.5 degrees Celsius. It should not be more than that. ठीक है, ये पेरिस एग्रीमेंट में कहा गया। बट इसको अचीव करने के लिए जो जो चीज चाहिए वो डिफरेंट कंट्रीज ने नहीं किया है। इनफैक्ट पिछले 1 ईयर में जो जो कंट्रीज अनाउंस किया है वो 1/5 है। जैसे 1/5 ऑफ रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड ओनली, ओके, मतलब जितना जरूरत है उसका सिर्फ 20% ही उन लोगों ने वादा किया है कि हम लोग ऐसा ऐसा करेंगे, ओके। Countries have only promised 1/5 of what is actually needed to control the temperature well below 1.5 degrees Celsius. ठीक है, so it's a serious thing because it appears that Paris Agreement would not be followed. ठीक है, यानी ऐसा लग रहा है कि जो 1.5 डिग्री सेल्सियस वाला लिमिट है वो क्रॉस कर जाएगा। यानी एवरेज अर्थ टेम्परेचर जितना था प्री इंडस्ट्रियल लेवल से उससे 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाएगा। और ठीक है, एक by the end of the century, that is what it says. As many nations seeks to reduce the reliance on Russia, the world is experiencing a gold rush for new fossil fuel projects. These are cast as temporary supply measures, but the risk locking the plants into irreversible damage. अब देखो, we are having Russia-Ukraine war. So what is happening is the nations are going for exploring new fossil fuel projects. Again, fossil fuel causes pollution. So बहुत सारी कंट्रीज अब नया जगह फॉसिल फ्यूल तलाशी, कहीं नया पेट्रोल मिल जाए, कोल मिल जाए कोई और कंट्री में, लेट्स से इन अफ्रीकन कंट्रीज दे कैन फाइंड नेचुरल गैस एंड ऑल, ठीक है। अब उससे हो क्या रहा है कि अब हम लोग को रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना चाहिए, लेकिन उतना नहीं जा पा रहे जितना जाना चाहिए। सो दैट इज वन थिंग दैट वी आर नॉट so serious about renewable energy as we should be, जितना होना चाहिए। World's poorest will bear the brunt of the destruction wrought by droughts, melting ice sheets and crop failures. हाँ, ये बात तो सही है। Whenever something bad happens, it is the poorest which get affected more. जो ज्यादा गरीब होता है उस पर ज्यादा असर होता है। Of course, many things becomes, you can say it is actually established fact that the poorest get affected the most. To shield these groups from loss of lives and livelihood will require money. Developing nations are actually cannot do, है ना। मतलब होता ही है कि देखो, developed nation की ज्यादा responsibility है। It is more the responsibility of developed nations to ensure this, है ना। Because rich जो है ना अपना जुगाड़ ढूंढ लेते हैं, जो गरीब होते हैं उन पर ज्यादा असर पड़ता है। So whenever floods happen, droughts happen, so they can go, they can take the flight, go somewhere else, build somewhere else houses and all. बट पुअर है, पुअर का घर जो है स्लम का बना हुआ है, टूट जाएगा, थोड़ा सा बाढ़ आएगा। ओके, रिच का हाउस जो है सीमेंट का बना हुआ, जल्दी टूटेगा नहीं। सो द लॉट ऑफ रीजंस। हाँ, यस, देन रिच कंट्रीज अकाउंट फॉर जस्ट 1/8 ऑफ द पीपल बट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाफ ऑफ ग्रीन हाउस। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है। व्हाई आई से कि रिच नेशंस आर मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ग्रीन हाउस गैस एंड ऑल। इसलिए कि रिच नेशन जो है वो वर्ल्ड का 1/8 पॉपुलेशन है।
1/8 मतलब कितना होता है, 100/8 करो, सो 12×8 = 12.5% है, बट दे आर कंट्रीब्यूटिंग 50% इन पोल्यूशन, ये ग्रीन हाउस गैस इमिशन। सो दुनिया का सिर्फ 12.5% का काउंट करते हैं, लेकिन 50% ग्रीन हाउस गैस इमिशन वहीं से होता है, बिकॉज दे आर मोर डेवलप्ड, सो देयर आर मोर इंडस्ट्रीज, मोर पोल्यूशन, मोर कार्स, मोर ऑटोमोबाइल, सो दे आर कॉजिंग मोर पोल्यूशन, सो दे आर रिस्पॉन्सिबल मोर, है ना। तो जो रिच डेवलप्ड नेशन है वो ज्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं, उनके पास ज्यादा इंडस्ट्री है, ज्यादा गाड़ियां हैं, सब कुछ ज्यादा है, तो पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है, तो उनकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। डेवलपिंग नेशन शुड बी गिवन इनफ कैश टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम, so that is why they have promised this. मैंने कई बार बात भी किया कि $100 billion they had promised to be achieved by 2020, but they have not still collected this even today. तो अभी पूरा $100 billion कलेक्ट नहीं हो पाया है ना, still it has not been collected yet. Creditors should be generous. Creditors क्या होता है, लोन देने वाला, the one who gives loan, है ना, who gives loan. Creditors should be generous in writing off. Writing off यहाँ पे मतलब होता है माफ कर देना, forgiving in the sense, ठीक है, for those on the front line of the climate emergency. Okay, so those who are actually those nations or those companies or organizations which are actually at the forefront in fighting climate change, if they have taken a loan or the burden is high, the creditors should waive it or reduce it. ठीक है, तो अगर कोई कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंट्री है, वो क्लाइमेट चेंज के लिए काफी फाइट करी है, अगर उस पर बहुत ज्यादा कर्ज का बोझ आ गया है, तो जिसने कर्ज दिया है वो थोड़ा रिड्यूस कर दे, ठीक है, या माफ कर दे कर्ज, ज्यादा बेहतर रहेगा, ओके, है ना। सो दैट वी शुड इंसेंटिवाइज अदर्स टू फाइट फॉर क्लाइमेट चेंज, ओके, दैट इज व्हाट द आइडिया इज। नाउ देयर इज नो टाइम फॉर अपैथी और कंप्लेसेंसी, द अर्जेंसी ऑफ द मोमेंट इज अपॉन अस। यानी अब हम लोग कंप्लेसेंसी नहीं हो सकते हैं, मतलब होता है कि सामने कुछ चीज हो रही है, वी आर साइलेंट, थिंग्स आर हैपनिंग, थिंग्स आर गोइंग ऑन रॉन्ग, सो पॉल्यूशन इज कॉजिंग, environment is getting damaged, and we are just watching as a mute spectator. That's called complacency. So we cannot have complacency. अगर हमारे सामने pollution हो रहा है, environment destroy हो रहा है, तो हम लोग शांत नहीं बैठे रहें, बल्कि हम लोग उस पर काम करें, है ना। So UN Framework Convention on Climate Change must be about the power of argument, not the argument of power. And a key to maintain the consensus in Egypt is not to let disputes over trade and war in Ukraine block global climate diplomacy and all. मतलब मेन मकसद ये कि अगर रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है तो इससे जो हम लोग का जो एफर्ट है वो रुक ना जाए। इवन इफ द रशिया यूक्रेन वॉर इज हैपनिंग, आवर एफर्ट ऑफ फाइटिंग क्लाइमेट चेंज शुड नॉट स्टॉप, वी शुड कंटिन्यू प्रोटेक्टिंग आवर प्लैनेट, सेविंग द प्लैनेट, ओके, इज इट क्लियर? नाउ अब देखो समस्या क्यों है, बिकॉज यस, अ लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया डाइज ऑफ पोल्यूशन, मेनी पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड, बट यस, मेनी लंग्स अफेक्टेड डिजीजेस are because of pollution and we do not realize, है ना। And you can see this is a down to earth article. If you see the CLAT sample paper, अगर आप sample paper उठा के देखोगे of CLAT, they have given a lot of passage from down to earth. If you see previous year question also, they have given questions from down to earth magazine. So you can go and read this article. It says air pollution caused an estimate 1.6 million deaths in India in 2019. 16 लाख लोगों की मौत हो गई 2019 में सिर्फ एयर पॉल्यूशन के कारण। सो इट्स अ सीरियस थिंग फॉर अस आल्सो, दैट इज व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज पॉल्यूशन इज लाइक एवरीवन इज गेटिंग अफेक्टेड। कोई ये नहीं बोल सकता है कि हमको असर नहीं पड़ेगा, ऐसा तो होता नहीं, सबको नुकसान होता है एयर पॉल्यूशन से। नाउ इफ यू सी इट केयरफुली, वी आर रनिंग एन A-Late रिविजन सीरीज एट 4 PM पर A-Late रिविजन सीरीज चल रहा है। सो टुडे इज 16, तो कल होगा, विल बी हैविंग कृष्णेंदु दत्ता सर 17th November assumption and conclusion session at 4 PM. Then on 20th with me on Sunday we'll be having important sports events 2022. Okay, now let's talk about side editorial. It is related with inflation. We have discussed in detail about this yesterday's class. तो आप जाना, please go and watch this yesterday's class. Just search BYJU'S exam prep The Hindu 15th November Salik. Search करना, you will get this. Here I have explained in detail about this. इसको हम लोगों ने यहाँ डिस्कस कर लिया है, इन्फ्लेशन एंड ऑल, सो आई एम नॉट अगेन रिपीटिंग इट। इन फैक्ट आई हैव गिवन क्वेश्चंस आल्सो ऑन दिस, इस बार मैंने क्वेश्चन भी दिया है, उसको आप जाके देख लो। ओके, यस, लेट्स टॉक अबाउट दिस, अंडरमाइनिंग फेडरलिज्म, इरोडिंग स्टेट्स ऑटोनॉमी। ये थोड़ा सा टफ आर्टिकल है, दिस इज एन इकोनॉमिक्स आर्टिकल एंड इट इज ऑन अ स्लाइटली टफर साइड फॉर यू, तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट आई विल एक्सप्लेन इन शॉर्ट। सो बेसिकली ही इज एक्चुअली Vice Chairman of State Planning Board, and he is actually TRS, Telangana Rashtriya Samiti. It's a political party, so he is a former MP from TRS. ठीक है, so he is actually critical of the union government.
तो ये केंद्र सरकार की एक क्रिटिकल आर्टिकल उन्होंने लिखा है. When NDA took off office in 2014, there were hopes that India would become cooperative federalism. This was because Gujarat CM Narendra Modi had been champion of cause of states autonomy. This hope was reinforced when Niti Aayog was set up. तो ये बता रहे हैं कि जब 2014 में मोदी जी आए थे तो ये उम्मीद किया जा रहा था इनके हिसाब से कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होगा, स्टेट्स को ज्यादा पावर मिलेगा. फेडरलिज्म है ना, फेडरलिज्म मींस देयर आर सेंटर एंड स्टेट एंड बोथ आर, स्टेट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंटर. ये होता है ना, स्टेट एक्चुअली हैज इट्स इंडिपेंडेंट पावर्स. तो उन्होंने ये कहा कि फेडरलिज्म और स्ट्रांग होगा, स्टेट्स को और पावर मिलेगा. इनफैक्ट नीति आयोग भी इसीलिए बनाया गया था. But he's saying actually कि this has not happened. You can say this is what he says. The cabinet resolution of January 1 setting up Niti Aayog has articulated among India is a diverse country with distinct language, faith, culture, ecosystem, etc. तो 1 जनवरी 2015 को जो कैबिनेट रेजोल्यूशन से नीति आयोग बनाया गया तो उसमें ये सब बात कही गई थी. ठीक है. So India is having a distinct language, faith, culture, etc. They seek a decisive say in determining architecture of economic growth, etc. and all. One of the main mandates of Niti Aayog is to foster cooperative federalism through structured supportive initiative. So the main aim, जो main aim है नीति आयोग का वो ये है कि cooperative federalism बढ़ाया जाए, यानी सेंटर और स्टेट में cooperation बढ़ाया जाए और स्टेट के बीच. It is unfortunate that Niti Aayog has not taken any major steps since its constitution to promote cooperative federalism. इनके हिसाब से नीति आयोग ने बहुत ज्यादा स्टेप्स नहीं लिए हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करने के लिए. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ही इज एक्चुअली क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट. तो मैंने पहले ही बता दिया कि जो आर्टिकल उन्होंने लिखा है वो केंद्र सरकार से थोड़ा क्रिटिकल होकर लिखा है. Contrary to its public statement on promoting cooperative federalism, government of India has been doing exactly opposite. तो इनके हिसाब से according to the author, the government of India is not, central government is not promoting cooperative federalism according to the author. Okay. The decision to treat off budgeting borrowing, देखो ये थोड़ा सा टफ चला जाएगा. ऑफ बजट बोरोइंग पर हम नहीं जा रहे हैं डिटेल, otherwise it will be too much. I have to explain off budgeting borrowing, then fiscal deficit, then there is a law. ये आप पढ़ लेना जाके, Fiscal Responsibility Budgetary Management Act. This is important. Okay. Okay. So just go and read it. Why I'm telling you? Because this actually act set a target that India's fiscal deficit should be 3%. इसी एक्ट ने 2003 में बना था ना, हाँ, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट 2003 में बना था. उसने टारगेट रख दिया था कि यूनियन गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट टारगेट 3% होना चाहिए. ठीक है, इस तरह का टारगेट दिया गया था. नाउ उसके बाद एक रिव्यू कमेटी बनाई गई थी टू फाइंड आउट whether everything is fine with FRBM Act or do we need any some changes and all. So who was the chairman of that committee? NK Singh, Shaktikant Das, Urjit Patel, Nirmala Sitharaman. What is the right answer? कोई बता सकता है? Fiscal Responsibility Budgetary Management Act के लिए एक रिव्यू कमेटी बनाई गई थी. Who was the chairman of that? Yes, very good, Riya Verma. It's NK Singh. He is a former IAS officer from Bihar. So A is the right answer. Yes, Ayush Deswal, Debadrita, Shubham, you all are right. Shreya, Sakshi, you all are right. हाँ. So आप देख सकते हो NK Singh is currently the chairman of review committee. इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा. So like for example, this was a target set initially. Bring down fiscal deficit to manageable limit of 3% by 2008. ये originally कहा गया था. Then due to financial crisis, some things got changed. Some of the targets have been changed now. NK Singh committee ने कुछ targets को change भी किया है. So go and find out that. थोड़ा सा आप पढ़िएगा, इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है. Otherwise it will be slightly on a tougher side for you. उतना नहीं जाना, but हाँ, एक overview you should go through it. So that is why I'm not going in detail. Former IAS officer, yes, NK Singh is a former IAS officer. ठीक है. He's got retired, हाँ. The next is Trump does not appear to be as strong as he was, and Biden is no longer weak. So we have discussed many times that there are two parties. One is called as Democrat. This is the symbol of Democrat, and this is the symbol of Republican. ठीक है. So these are two main parties in America. Okay. So elections happened for I can say Senate and House of Representatives. Senate is the upper house, and House of Representative is lower house. ठीक है. In USA. तो उसमें जो actually क्या हुआ है? Basically, we were expecting that in both the houses, Donald Trump, that is Republican, will be performing better. So Donald Trump की ये वाली पार्टी है, Republican, and this is Joe Biden's party, है ना, the president of USA. Okay. Okay. Yes. हाँ. This is donkey and this is elephant. Okay. So it was expecting कि Donald Trump's party would be performing better, लेकिन ऐसा हुआ नहीं.
ठीक है, बाइडेन इज नो लॉन्गर वीक, ये जो उम्मीद किया जाता वैसा हुआ नहीं. इनफैक्ट इन सेनेट डेमोक्रेट इज स्टिल हैविंग स्ट्रांग होल्ड, एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इवन इफ रिपब्लिकन हैज गॉट good seats and more seats, but still Democrats are not very weak. ठीक है, so just have an idea about this. Why are you all sending emoji? अच्छा, डंकी की वजह से नहीं. This is their party symbol. I don't know. This is the party symbol of Democrat. This is the party symbol of Republican. ठीक है. Okay, so that is what is being discussed here. मैंने already discussed करा है, so we are not going in detail. Okay, then page number 10. Troops in Eastern Ladakh gets 3D printed habitats defenses. देखो होता क्या है, देखो 3D printing ना एक separate technology. It's a technology called as 3D printing, which is used to make many things. इसके लिए बड़ी बड़ी मशीन आती है, big machines are there to make these 3D printings. इससे क्या ना बहुत सारी चीजें हाउस बना सकते हो. देखो these are the houses, देखो छोटा छोटा. So like this Indian Armed Force turned to 3D printing for military construction. ठीक है, तो आप 3D printing के माध्यम से छोटा छोटा घर बना सकते हो, है ना. So you can see it here. 3D printing to construct 22,000 temperature controlled relocatable habitat. मतलब ऐसा घर बनाए उसको बंद करके फिर कहीं और जाके फिर खोल सकते हो, राइट, है ना. तो relocatable का मतलब होता है कि फिक्स्ड घर नहीं है. अच्छा, स्मॉल हाउस, you can relocate it, you can change it, you can close it, then go somewhere else, then again open it. जैसे टेंट कैसे होता है, आप कहीं भी लगा सकते हो ना. So it is relocatable. So similar to that, this 3D printing houses are relocatable. It can be moved from one place to another. हाँ, yes, Roe versus Wade case is important. Shreya Rajput, please go and read about it, है ना, वो पूछ सकते हैं. Okay, the next one is no money for terror conference is going to happen in which country? India, Indonesia, Russia, Ukraine. अभी होने वाला I think एक दो दिन में. Guys, we are seeing 41 likes, 51 is watching. Everyone, please press the like button and subscribe to our channel also. No money for terror conference is going to happen in which country and which city? आप city भी बता दो. हाँ. Anyone? So the right answer is India, New Delhi, and A is the right answer. Yes, many people have answered. Ayush, Krishna, Nancy, Asmita, Ria, Surushi, Nivinaik, you all are right. You can say this is third edition of No Money Conference Forum to discuss crowdfunding. ये भी पूछ सकते हैं कौन सा edition है. So third edition है. Okay, it is going to happen from 18th and 19th November. मतलब आज 16 है तो परसों तरसों से होगा, है ना. Okay, is attended by representatives from 75 nations. Okay, just have an idea. Let's see what will be discussed. Then there's an article, High Court asked Morbi Bridge work was given without tender. Okay, I hope you are aware of what actually happened a few days back in Morbi. Morbi is a place in Gujarat. This is a Gujarat, and so this is Morbi. So what happened was actually a bridge got collapsed, hanging, जिसको हम लोग suspension bridge कहते हैं. So it got broken and almost 130-140 people died. तो इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, what Supreme Court said? Supreme Court नहीं, High Court ने, Supreme Court actually asked that Oreva Group was actually given tender. Oreva Group was actually given the work without floating a tender, while hearing a suo motu petition. मतलब होता क्या है, let's say bridge is being made. तो अगर bridge बनाया जा रहा है, ठीक है, तो उसको टेंडर फ्लोट किया जाता है, सो हाईएस्ट बिडर को मिलता है ना, इस तरह होता है. बट इट वाज नॉट गिवन अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज कि इट वाज गिवन विदाउट अ टेंडर व्हाइल हियरिंग ए सुओ मोटो पिटीशन. ओके, सो दैट इज व्हाई द गुजरात हाई कोर्ट हैड आस्क्ड कि क्यों नहीं टेंडर फ्लोट किया गया. नॉट सो जस्ट गो एंड रीड अबाउट इट, है ना. Blackout in many Ukraine cities after Russian strikes. So this was also in the news. So when Russia striked, actually Russia is attacking at many places in Ukraine, and because of which actually बहुत सारा electricity जैसे जहाँ electricity produce होता है, electricity production house might have been demolished. तो जब बम गिरेगा तो कहीं भी गिर सकता है ना, तो हो सकता है जहाँ से electricity supply होता है उसी पे गिर गया हो, तो सारी जगह लाइट चली जाएगी. So that is what perhaps has happened, blackout in many Ukraine cities because of that. Okay, so that was in the news. एक question है, after the class is over you have to answer this in the comment section. कमेंट में आपको ये आंसर करना है. फॉर्मर चाइनीज एनवॉय टू इंडिया अपॉइंटेड वाइस फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना, व्हाट इज हिज नेम? इनका नाम आपको कमेंट में. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज अ वीडियो ऑफ 14 नवंबर, जैसे तो इस जैसे आज 16 नवंबर का वीडियो होगा, इसके नीचे यहाँ पर यू हैव टू राइट इन द कमेंट, द स्टैटिक कमेंट में
लाइव चैट में नहीं, जब रिकॉर्ड हो जाएगा वीडियो उसके बाद. So write the answer and of this question. It's a homework for you. Okay. So this is the news actually. Okay. So this is all about today's class, guys. These are the last lab series at 9 p.m. So today we'll be having 16th November. Nivedita ma'am will be there. So please subscribe to our channel, follow us on Instagram, Facebook, Telegram, and download the BYJU'S Exam Prep app. Thank you, everyone. Thanks for watching. Have a nice day.